SEZ online and how to log in and create transaction, file transactions, correct? Yes, only, but major you can say. Okay, okay, fine. So, to the majority of the people who are new to SEZ online, I would like to give a little background of SEZ online. Okay, so SEZ online was started as in this SEZ Online started in 2010 by Ministry of Commerce and Industry. Okay, so Ministry had a vision that they wanted a single window clearance system for SEZ ecosystem. They wanted to they wanted SEZ developers, DCs, and all to be on a common platform, and so that the registration process and the transaction trade it could benefit the trade in a speedy manner, and it could boost the economy. Hence, so SEZ Online was created, and NSDL database management comes as a managing service provider for this web SEZ Online facility. Okay, so SEZ Online has many features like we inbox facility, we have given search facility, report. We have given user management. You can create n number of users in SEZ Online, and you can file uh, various trade admin transactions. We have given signing functionality that whenever you submit a transaction, okay, you can authenticate it through a digital signature so that every application where you view is not just dummy, it is authenticated by a person. Okay. We have also given it's a maker checker concept. So if the maker creates the request, the checker just verifies the data and submits it with digital verification. Okay, so currently you can see on the screen that these are the modules which are there are many modules available. There are like more than 30-35 transact modules available, but for particularly gift SEZ, these are the main important modules like service reporting, service export reporting form, software exports, APR, monthly performance report, DTA procurement, DTA service procurement form, and DTA exports. Okay, so these are we are focusing for gift SEZ particular these modules. Okay, so in through throughout the session, I'll be explaining these modules and how you need to file, how you have to go through the registration process, payment procedure, how to create your users like unit maker and unit approver, and how to file your SERF soft tax. All this I'll be demonstrating. Okay. So as I said, these are the features of SEZ Online. This is a 24/7 application. Okay, you just have to log in. You just need an internet connectivity, and you can just log in and do your transactions. Sorry for interrupting. FAQ last में लेना है कि anybody can ask a question in between. Yeah, FAQs last में लेते हैं. Throughout the session, any queries you have, I request you to note down your queries, and at the end of the session, we can have a small Q&A and proceed. Okay, and Chat I'll box answer में all your questions. can they drop FAQ questions in the chat box during the Chat box difficult रहेगा because I'm only giving the presentation right now. So ठीक है fine uh, okay. जो भी रहेगा वो मेल पे भी डाल सकते हैं. हाँ हाँ वो ठीक तो है. है ही. Yeah. हाँ. So that's not a We'll be problem. recording the session and then later on we'll be sharing अगर वो properly हुआ है record तो. Okay fine. Sure. Okay Yeah. thank you. Okay. Continue. Yeah. Thank you. Uh, so as I was saying, these are the features of SEZ Online. As you can see, it's a 24/7 online application. You just need an internet connectivity and you can file transactions anywhere, anyhow. Like, uh, so we have created hierarchies based on the DC, and so DC. So any application, if you're filing any admin applications like letter of approval or LUT transactions, they'll be going to the DC hierarchy. And if you're filing any trade transactions like bill of entry, shipping bill,
So these will be going to the custom transaction, custom hierarchy, custom officers, custom assessors, approver authorizers. Okay. Maker check and consent, which I said earlier, digital signature certificate. So unit approvers have to make note that whenever they create a admin creates a unit approver, they have to map a digital signature certificate to them, DAC serial. I will be showing that uh, through the user management session. Okay. So these are the facilities which are given in box facilities. So it's status history. If you can see, like you have submitted transaction, you need to see the status of that transaction. We have given a view status history link against it, so you can view the status after submission, where it is, with whom it has been, or the latest status that is there towards for that request. Okay. So service export, starting with the first module, service export. So basically any service exports like royalty or software or other consultancy services or warehousing services, if you have and you're exporting these services to any units in DTA. So you are required to file service export reporting form, and this form needs to be filed by 10th of every month. Okay, so if you don't file by 10th, okay, and you miss the deadline, the system will not allow you to file any other transaction. It'll it's a mandate option that you will have to complete the service export reporting form and submit it to the DC office. Okay, this is how the form looks. You have your general details where your LOA, your reporting month which you are reporting for. Okay, the details of your unit in the second screenshot. Okay, and then you can see in the second screenshot itself, the below part, that your what type of export that you're reporting for that month is updated over there. Okay, and then in the end, the declaration or uploaded invoices that you have uploaded is there. After you submit, this is how the form looks. Okay, so in the second screen, you can see that the type of service export that you've done, the SEC that is captured against it, and the number of invoices. It comes in a summary form. When you upload the data in through the service export template, it'll be detailed, but in the form, in the request creation and in this printed format, it'll come in a summarized manner. It'll come in such a manner ki against this SEC, what type of export you're doing, and how many invoices are there, and its value, total value. The next important module is software export. So uh, units who are doing any software exports to that, and they have to report this software exports to our RBI. Okay, so they have to. It's mandatory for units who are doing software exports to enter detail and SEZ online. So once you submit and certified and SEZ online, the data is shared with RBI, and then RBI knows that you have done such a transaction. So in this software export, we are also given facility of uploading bulk. Users can upload single at a time, or you can upload bulk software exports at a time. That facility is available. We have also brought in a cancellation facility. So suppose a particular software has been certified, okay, and user due to some reasons could be cancelled. Okay, so we have a link where users can upload the same softtext numbers they'll have to mention, and then process it in the same way as they did it for softtext. So once that softtext cancellation request has been approved by the DC office, then that softtext gets cancelled. That particular softtext number for that softtext request ID gets cancelled in system. So we have a cancellation facility.
So these are the reporting forms which users are requested. Like SEZ unit must file. Okay. The first is the annual performance report. So annual performance report has to be filed the previous financial year has to be filed by the first quarter of the current financial year. Okay. So and it has to be filed and certified by the chartered accountant. Authorized signatory has to be a chartered accountant and it has to be submitted to the DC office. The next monthly reporting form is monthly performance report. Unit have to fill in the details like the employment details and other details by 4th of every month. This link is available with the unit approver. I will show the link and after going through the presentation, I'll give you a small demonstration of how the uh, manuals look and how you can submit this transaction. Okay. So users have to first pointers users have to submit it by 4th of every month. Okay. If you have not if you have missed, say for example, you've missed the deadline for June. So after you clicked on monthly performance report, you will get a link to update previous 3 months data also. Okay. So users who have missed April, May can also go and update the previous record. So DTA procurement is a module. Say for example, if you have set up a unit and you're bringing in machinery or like computer equipments for your employees or sofa or a furniture for your office. Okay, so it is important that units have to file a DTA procurement of that request. So DTA procurement is a module that is filed to show that what you are procuring from the DTA market. Like it could be an office furniture or computer accessories. Okay, this is a custom transaction. So once the approach submits this transaction, it will go to the custom officer screen. We users will have to capture basic details like who is from where you're getting the invoice details. You'll have to capture the if IGC or GST that is paid. Is the item detail you'll have to capture. The the tax details you have to mention. So after you submit this form, this is how the form looks in SEZ Online. So if it's a zero rated supply, you and it's under legal undertaking, you can mention the details over here. The request ID is populated over here. Sorry. The buyer detail would be SEZ unit in this case, so the details and address would be captured here. Okay. SEZ unit GSTN is captured here. The port code, the DTA units detail is also mentioned. The invoice number, invoice date, invoice serial number, its currency, its values populate. The item that you are procuring appears on the screen. And then at the bottom, you can see the IGST details. Then this module is the domestic service procurement mode. So in case you have procured any services from a domestic market, so units will have to file this module. So previous module we saw DTA procurement, which was purely for goods that you're bringing into SEZ online. Okay. Now this module is for services that you've procured from a DTA unit. You will have to file and upload it in SEZ online. Okay. We have made a macro available for units. Users have to just fill in the details and that macro and upload it in
the DSPF, and the details will get uploaded, and you can submit it to the DC office. Customer. This module is not just a reference purpose. It's like a DTA procurement, but for export purpose. So you just it's same like DTA procurement. It's nothing. Just if you have a scheme code applicable, then that's applicable. DTA procurement export with benefit can be filed. So another features like LOA renewal is there. So say for example, if a unit has registered successfully in SEZ Online and it has commenced its production and the LOA is valid for 5 years. Okay. At the end of the fifth year, okay, users will be alerted in SEZ Online 90 days prior. That is 3 months prior. It will be notified through email notifications and through your UI. On the once you log in on the UI, it will also be notified. So system will automatically notify you that your LO is expired, then and you will it's going to expire and you'll have to file LO renewal for the coming 5 period or coming tenure. So users have to go through the LO renewal. The link is available for the unit in the unit maker login. Okay, unit maker will have to log in, go to the LO renewal, and file and submit the data to the DC office. And once the LO renewal request is approved, only then the next tenure is applicable, gets updated in the system, and you'll be able to file for the next tenure. If you miss out in your LO renewal and you pass the deadline, okay, say for example, 30th June was your last date, and you have not filed a LO renewal in a sales online system, uh, users won't be able to file any transactions. System will stop you from doing anything. Okay, so it is important. So if any units who already completed the 5 years or about to complete the 5 years, please look out for notifications where its system is saying for LA renewal and file and submit and get it approved by the DC office. In case units have missed out the deadline and they have not, maybe they didn't see the notifications or email alerts they were receiving for this 90 days or okay. We have also given a temporary allow extension facility to the DC office. So you can approach the DC office directly and ask for a temporary allow extension. Okay. DC office have a link and they can also extend this facility. So say for example 30th June you missed out and you can approach the DC office and they can say for example if you and both you and the DC office come in a term to that by end of July you will be filing and submitting your LO renewal. So they can allow you to file the temporary. So they will give a temporary LO extension. So benefit of this is what say if you have a current transaction, SCRF that you have to file and report to the DC or any other module that you have to file through the temporary LO extension, you can file that transaction, but units will have to keep in mind that you also have to file an LO renewal request and get it completed. So another feature is LUT details. So after a unit has some registered and says online, mandate is LUT details that they'll have to capture in SEZ online. Existing units, sorry, units who already have an LUT but have not updated in SEZ online, they can use this LUT detail submission link. Okay. So what happens is that once you file this, you are giving the details of a current LUT that you have and submitting it to the custom officer. It goes to directly to the SO, and SO can approve it, and the LUT is updated system. For new units who have registered in Sales Online, you will have to file a first new LUT request, and then
If that LUT expires, then you'll have to file update LUT. Another important validation in Search Online is DCP intimation. After you have registered, the first and you're commencing a first export. Okay, it could be SERF through SERF or any other module. So you have to intimate this to the DC office through a freeform application. Okay, this application is called DCP intimation freeform application. I will show you this. This is also covered in this session. I'll show you where you'll get this link. Okay, and how you have to file and submit it to the DC office. Okay, so once you file and submit this DCP intimation form, the DC office, this request goes to the DC office and the DC office approves it. So your LOA, which is valid for 1 year, gets automatically updated for 5 years. Okay, so this is an important module for when you're commencing your first export. So this is the user management. You can see the type of users that are available for SEZ units. Okay, so first, when you're registering in SEZ Online, you log in with the unit applicant. Okay, you process your NUA application with a unit applicant ID. Okay, so once your registration is approved, DC approves it with LOA authorized, and then you go ahead and make payment to SEZ to us. Okay, then you get an option to create that applicant ID as an admin ID, or you can create another user as a admin ID. So once you log in from the set, once you create an admin ID and you log in with that admin ID, you get to manage few more users. Okay. So admin user is the purpose of admin user is just to create additional roles and give them functionality. Okay. But it does not have the function to process any request. It can create users and manage them. So you can create a maker ID who creates requests, and then you can create approver ID who verifies the created request and submits it to the DC or custom. Okay. Now, approver user has other functions also like making payment or checking, making payment, and then SCRF, they can unit approval files. Okay, CHA user is optional for your case. CHA is for basically who are doing trade transactions like bill of entry, shipping bill. Many manufacturing units they hire CHAs to file their bill of entry. So those CHA users are for applicable to them. Okay, so here you can see admin users and function. So creation and management of the users, allocation of functionality, reset. If in case your maker and approver ID gets locked out, you can reset password from admin ID. You can disable, say for example, if a user has left your organization and he was a maker or approver in says online, you can through the admin ID can disable that user so that no request can be filed or no request can go into his or her inbox. Okay. Reallocation or request, I'll explain this later. Exceptional handling in some other scenario. So these are the type of modules available in SEZ Online right now. So your unit application, developer registration, co-developer registration is available. LOA renewal, LOA extension, bond come legal undertaking, that is your BLUT. Then annual performance report, NPR digitization, or many other forms is there. Then on the custom side, you can see shipping bill, bill of entry, data sale. These are the modules that are available in Search Online.
This is just for information purpose. You can just go through it. So these are the applications which we have digitized, like intimation and DCP, and many other say and expansion or everything. IEC application and RCMC application, broadbanding request. Okay. Okay, so I'll just go quickly and show you, demonstrate you how you register and how, like I've already registered one unit in SEZ Online. I'll show you how to proceed further from there. Okay. But before that, what I'll show, two units who want to register in SEZ Online, like who want to, okay. So how to make an applicant ID and submit the application. I'll just show that. Just a minute. So are you able to see my screen? Yeah, yeah, it is visible. Acha, Okay. I would like to ask anyone who has been issued LOA manually, मतलब ऑनलाइन जिसका LOA इशू नहीं हुआ ऐसा कोई यूनिट है क्या अभी? Yeah, We I have think already submitted to can I raise हाँ, my hand? This is Sarah yes, yes, here. sir. If I'm audible, Yeah, yeah, you're audible. Please, sir. you see, there are some issues. As I was hearing your session since the beginning, Mr. Avinash, it was very, knowledge gathering, and I Yeah, want to know few things. But once you complete your this session, then I have a yeah. specific question regarding LOA. So if Definitely, you, definitely. so if, No worries, sir. so if After this, definitely क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखे हम लोग ने, मतलब ये मैं सिर्फ छोटा डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ कि आपको न्यूनल एप्लीकेशन कैसे बनाना है और सबमिट करना है, ठीक है। hmm, और लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट डिटेल्स कैसे बनाना है या पेमेंट सबमिशन कैसे करना है या यूजर्स कैसे क्रिएट करना है, आपको ट्रांजैक्शंस क्या फाइल करना है और स्क्रीन कैसे दिखते हो, मैं सारे ये चीज में ये छोटा हाँ डेमोन्स्ट्रेशन ले रहा हूँ हाँ इसमें, ठीक है। करेक्ट आप ये करें तो उसके उसके बाद बाद मैं हाँ डेफिनेटली उसके बाद एक क्वेश्चन श्योर एंड आंसर सेशन रहेगा, उसमें यू कैन श्योर रीच योर क्वेरीज। डेफिनेटली। श्योर श्योर सर आपका नाम क्या था? I'm Sarah here from Richie Sancheti Associates LLP. ओके ओके, श्योर This is, डेफिनेटली। yeah, thanks. ओके, या नो सर। Okay, so right now what I will be showing is how IFSC units. So currently there are two scenarios who IFSC has issued already LOAs to some units. Okay, so for those units who already have an LOA manually, they have to submit a unit application. Okay, and submit, and then they have to share the details to us. Okay, and we will verify the detail and we'll update the status of that NUA application to LOA authorized. Please note this is just for those IFSC units who already have an LOA, okay, and who are not registered in SEZ Online. They don't have LOA issued generated from SEZ Online, but IFSC has issued LOA to them separately. Okay, only for those units, I'm showing how to create an application and submit it to the DC office. Just submit it. That's it. And share the details with us. Okay. So this is the login page. This is the pilot link actually. It's the replica of the production link only. But can you see size unit setting up a new ICZ unit? So units who Yes, want sir. to register, okay, you will have to click on this link. So what are we achieve? What are we doing is in this process is that we are first creating an applicant ID, okay, and on from that applicant ID we'll be creating a unit application, okay.
And from that, you will have to submit that new application. So for creating new applicant, we have to follow this. So the user category would be SEZ unit. You know, if you're a developer, you will have to select developer. If you're a co-developer, you'll have to select co-developer. For now, we'll go with SEZ unit. Okay. User ID could be of your choice. Okay. I'll go with, sorry. Uh, the prerequisite over here is that you will have to upload your photo, your PAN details. Okay, so make sure your photo and your PAN is updated in it's available on your screen on your desktop. So I'll just update. ठीक है. Sorry. So I've uploaded my photo. I'm uploading my. This is a dummy. यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका डिटेल्स रहेंगे. Uh, don't at any moment, please don't enter junk data because यहाँ पे आपको OTP आएंगे वेरिफिकेशंस के लिए. So ये यहाँ पे जब भी आप न्यू एप्लीकेंट क्रिएट कर रहे हो, so you have to capture a DAC serial number. So one of the important prerequisite before creating your applicant ID is you have to have a photo ID. You have to have a PAN copy. If you have a letter of authorization, we have given a link for that. Okay? You can update a letter of authorization. If a particular person is authorized to do this operation, you can attach these letter over here. Okay. And the third most important part is serial number has to be your DAC. So when you are submitting a new application, you require a DAC to submit it. So to submit, the data is serial number and your certifying authority. Okay. So this is a dummy data over here. I'll be updating it. और वो सर्टिफिकेट का इमेज आपको यहाँ पे अटैच करना है. My bad, my bad. Hmm.
And copy. Open button. Capture duplicate. So we have now created your applicant ID now. We can go ahead and verify the details. Uh, so this is why I was saying कि avoid putting junk data because जब भी आपका यूजर आईडी लॉग इन होता है या नोटिफिकेशंस आते हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट आप करेक्ट डिटेल यहाँ कैप्चर करें. Just a minute. I'm just updating the serial number. Just a minute. अविनाश जी, जैसे ही एफएससी सिलेक्ट कर लेता फॉर्म एफए हो जाएगा ना, नॉर्मल एफए फॉर्म एफ विल बी चेंज टू फॉर्म एफए. अविनाश जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. अविनाश जी आप म्यूट पे हैं.
अविनाश जी अनम्यूट कीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Hello, can you hear me now? Sorry, the mistake I muted Yes. myself. हाँ. Okay, so So here we are just wanted capturing to the confirm. general details. Okay, जनरल डिटेल से IFSC सिलेक्ट करना मैंडेटरी फॉर फॉर्म FA, नहीं तो नॉर्मल फॉर्म ऐप जनरेट हो जाएगा इफ यू सिलेक्ट अदर देन IFSC फर्स्ट इनिशियल में. so automatically major industry will be selected as IFSC. You can select a minor industry as like you're a banking unit or an insurance company. Okay, so your transaction detail, here the transaction amount which is given, you will have to capture the amount which is you have paid to the DC office. Either DT बेसिकली आप जो सबमिट करते हो डीसी ऑफिस को वो डीटी डिटेल्स आपको यहाँ पे कैप्चर करना ये अभी चेंज किया कि पहले था ये पेमेंट डिटेल्स वाला ट्रांजैक्शन डिटेल्स. है डॉलर कन्वर्जन 84 company code already exists so wait a minute so just make our सारे details देख रहे थे okay see so once you save the details additional tabs will open here. Those tabs would be like your director details, your item that will be. So item could be your services that will be doing then investment, the infrastructure, your equity share, everything. Okay. Now, request is those existing units who have already submit. I mean, who have submitted a form FA to the IFSC, and they have a form FA copy or approved by the. Okay. You will have to capture the data over here as per your form FA only. Okay. Requesting not to put junk data because this application works like a say tomorrow if I have to check the details of your application. Okay. The correct data needs to be updated. So we know that it's an authentic unit. It's not a there's no junk data. To avoid junk data is the question. Is the point of view. Okay. So here you can add director details.
ठीक है। अ, कोई सर्विस अकाउंटिंग कोड बता सकता है चैट पे? वो मैं डालता हूँ यहाँ पे। इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। आवाज आ रहा है मेरा? Can anyone put in your service accounting code? I'll just put it in the application. सर्विस कोड देखना पड़ेगा, वेट अ मिनट। Fine, no worries. अविनाश जी चैट बॉक्स में देख लो, एसएससी कोड आ गया लीगल सर्विस का। So SEC code you can capture here. Okay. Save it. आपके और दो तीन आइटम रह सकते कैन ऐड एंड अकॉर्डिंगली जो सर्विस कोड है applicable you can mention that details over here and add it. यहाँ पे आपने जो फॉर्म एफ में जो इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर किए हैं जो फॉर यू हैव टू कैप्चर द एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ओवर हियर. Again, I'm saying this is the process that I'm suggesting for units who already have an LOA issued by the IFSC authority. Okay, for those units who are going to register and they don't have a LOA issued by the IFSC authority, they have to submit the transaction and go according to the workflow. ठीक है, जो जिनका ऑलरेडी एलओए है आईएफएससी से, ठीक है, उनको सिर्फ सबमिट करना है और वो डिटेल्स हमें भेजना है या मैं वो डिटेल्स शेयर करता हूँ मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे हेल्प डेस्क ईमेल आईडी पे उनको शेयर करना है. हम वो डिटेल वेरीफाई करेंगे एंड देन वो बैकएंड से अपडेट करके उसका स्टेटस वेरीफाई कर देंगे, एलओए ऑथराइज पे लग के ला देंगे. ठीक है, फॉर दोज यूनिट्स हु ऑलरेडी हैव एन एलओए. ओके, for units who are freshly registering in SEZ Online, they'll have to go through the workflow. Like after submitting a new application, you'll go to the DC office and you'll have to follow up with them and get your application approved and get the LOA generated. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ऑफिस का स्पेस कितना है, आपको स्क्वायर मीटर्स में कैप्चर करना है, आपके टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं से फॉर एग्जांपल, सो वो कैप्चर करना है. ठीक है, so you just bear with me, the system is a little slow, the staging environment is actually a little slow.
This is just a detail I'm capturing for showing purpose distances. It can be on actual, it can be as per what your equity is. You can capture over here. Sorry. Hmm. This way. Okay. जो यहाँ पे ये टैब में जो एप्लीकेंट है वो डिटेल्स आपको कैप्चर करना है जो अप्लाई कर रहा है उनकी डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट करना है यहाँ पे मार्केटिंग कोलैबोरेशन का ऑप्शन गया आपका अगर मार्केटिंग कोलैबोरेशन यू कैन एंटर द डिटेल ओवर हियर एनीटाइम इट्स नॉट मैंडेटरी अगर है आपका तो आप डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं ऐड डॉक्यूमेंट में हमने फैसिलिटी दी है कि आपको अगर फॉर्म एफए है तो फॉर्म एफए आप जो साइंड एंड स्टैम्प्ड है वो यू कैन कैप्चर डॉक्यूमेंट नेम डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट क्या है उसका रेफरेंस रहेंगे तो रेफरेंस नंबर एंड सेव इट ठीक है या here we have given a choose upload file facility मतलब आपके जो पीडीएफ्स रहेंगे sorry, if you have a form FA, form LOA copy or any other director details that you need to attach, we have upload facility. So जो you can upload in Word, Excel, PDF, zip. These formats we can upload. And the maximum size has to be 10 MB, not more than that. Okay, it has to be within 10 MB or at the most just 10 MB. Again, I'm saying the format which is there available is PDF, Word, Excel, and zip files. So if you have like 2, 3 or 10, 15 PDFs, you can zip it together and upload it over here. But the size shouldn't exceed more than 10 MB. So this is how the form FA will look like after you fill in the details and everything. Okay. So जैसे अभी देखा मैंने वो जो सीरियल नंबर यहाँ पे कैप्चर किया था तो उसके ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है सो आई हैव टू सेलेक्ट द सर्टिफिकेट व्हिच इज देयर एंड साइन इट okay so important point here
ठीक है। अगर आपका कोई केस में अपनी सीरियल नंबर गलत कैप्चर किया है, ठीक है, तो आपको ऐसा वैलिडेशन आएगा, सर्टिफिकेट serial number invalid. So in this could be like you might have missed out a digit, or you might have copy pasted a wrong serial number against the certificate which is actually authorized to you. Okay, so what you can do is you can go to the preferences, edit profile. हाँ, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन पेंडिंग, एक मिनट। So I have to verify my email address as you saw. So in order to check my or edit my profile, I have to verify, I have to authenticate my email address and my mobile number. So this is very mandatory. I'm just completing my verification. Just a minute. Okay, I've done it. Okay, so I go to edit profile now. ये स्टेजिंग एरिया, तो इसमें डमी ओटीपी अनेबल्ड है, तो प्रोडक्शन में आपको मैसेजेस आएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो जाओ मैं ले लूंगी आप चिंता नहीं करो So here you can see that my all the details which I created while creating this applicant ID is captured here. So यहाँ पे मुझे मेरा सीरियल नंबर चेंज करना है, so I can go and make the changes. Click on update DSC, make the DSC serial number change, जो correct DSC serial number है, choose the certifying authority which is there, and upload the certificate file. ठीक है, this is this is how you can make, if you get that validation you can make the changes over here. So we have received many cases where unit approach to us and they say कि सर मैंने एप्लीकेंट आईडी बनाने के टाइम पे मैंने डीएसी सीरियल नंबर मैप नहीं किया था, या सर्टिफाइंग अथॉरिटी मैंने ये नहीं किया था, तो क्या करना। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया प्रोसेस कि आपको एडिट प्रोफाइल पे जाना। अगर एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद ये सारे डिटेल्स आपके ओपन हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन टू द डीएससी डिटेल सेक्शन, update DAC, click on update DAC, enter the DAC serial number and your certifying authority, upload a certificate, mention the reason, and save it. And then go to the inbox and then try to submit your application. Just a minute. I'm just trying to map the serial number and everything to my user. Just a minute. Just 2 minutes.
So just a minute. I've just updated the serial number from backend. So I'll just show you. तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे अपडेट किया, ठीक है। नाउ आई कैन गो अहेड एंड सबमिट द एप्लीकेशन। सॉरी, न्यू एप्लीकेशन में जाना। एक मिनट, जस्ट लॉग इन अगेन। Okay, just a minute. तो अगेन ये फॉर्म एफ आपके सामने है। गो अहेड, select your certificate, okay, and sign it.
So once you submit it, you'll get a message like your request has been processed successfully, which means that your annual application which you have created has been submitted and it's gone to the DC hierarchy. So here what again I told previously, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, जिनके पास एलओए ऑलरेडी है, मतलब उन्होंने फॉर्म एफए भर के उनको आईएफएससी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एलओए इशू किया है, ठीक है, मैन्युअली, उनको ये स्टेप के बाद ये एनुअल एप्लीकेशन जैसे फॉर्म एफए में भरा है वैसे ही यहाँ एनुअल एप्लीकेशन में भर के सबमिट करना है और सेज ऑनलाइन में ना आप हमें मेल करना है, मैं आपको स्क्रीन बता शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। You have to mail us in this format. You have to mention your unit application unit name, your annual request ID, जो request ID है हमने जो जनरेट करी रखी है, ठीक है, वो आपका आईएफएससी ने जो फाइल नंबर या एलओए नंबर आपको इशू करके रखा है वो, उसके इशू डेट, फॉर्म डेट एंड टू डेट, ये 6 डिटेल्स आप हमें मेल करना है SEZinfo@ndml.in। यज्ञेश जी को और मुझे ये तभी करना है जब भी आपने एनुअल एप्लीकेशन सेज ऑनलाइन में सबमिट की और अब you have to capture the details of your and submit it to us. So what we'll do is we'll verify the details from our end. हम बैकएंड हम चेक करके फिर आपका वो स्टेटस अपडेट कर देंगे हमारे एंड से, एलओए ऑथराइज पे लिखेंगे, ठीक है। And for those units who are who I mean आपको आईएफएससी ने एलओए इशू नहीं किया, आपको एलओए जनरेट करा के लेना है, यू विल हैव टू गो थ्रू द वर्कफ्लो बेस्ड कंसेप्ट। मतलब आपको एनुअल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको डीसी के साथ फॉलोअप करना पड़ेगा एंड वो आपको एनुअल एप्लीकेशन अप्रूव करा के लेना पड़ेगा। ओनली व्हेन योर एलओए हैज बीन जनरेटेड थ्रू सिस्टम, एलओए ऑथराइज्ड हो चुका है बाय द डीसी, then only you can go ahead and make the registration fee payment to us, ठीक है। नाउ कट शॉर्ट मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ आपको जहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसका एलओए ऑथराइज हो चुका है, ठीक है। I'll just log in from that user. I'll show you how the screen looks. So once your application is approved, so you get the first detail that your LOS has been authorized, and then it shows कि you will have to make registration fee payment to us. Okay. तो यहाँ पे आप registration fee payment link देख सकते हो. Click on it, and automatically you'll get the details. By default, registration तो यहाँ पे अगर आप जीएसटी कैप्चर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम विल सिलेक्ट 18% and the tax that is there and the net amount that you have to pay. Okay, system will automatically compute that for you and we have the payment mode available. एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो या आप ये अमाउंट एनईएफटी आरटीजीएस के मोड पे दे सकते हो या चेक के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ, हमारे इसमें अवेलेबल है कि आप कौन सा अकाउंट पे करना चाहते हो, एवरीथिंग इज देयर। So I'll be going with check DD. You have to select your confirmations, declarations, चेक नंबर आप डाल दो, बैंक कौन से इसमें से किए हैं आपने वो डाल दो, ब्रांच मुंबई, चेक डेट, तारीख एंड पे। ठीक है, तो ये पॉइंट पे क्या है आपका, आपने जब रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट की है एनएसडीएल को,
वो आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो। अनिल, एक ऑप से स्टेजिंग में पेमेंट ऑथराइज करना। So once it is authorized, I will show you what links get available on the left hand side. Okay, just a minute. Huh? Okay, plus. Hmm. ठीक है, just a minute. Sorry. So after payment has been authorized, ठीक है, आपको दो ऑप्शन आता है। मैं जो पहले बता रहा था, मेक मी एंड एडमिन एंड क्रिएट एन एडमिन। तो मेक मी एंड एडमिन में क्या होता है, आपने जो एप्लीकेंट आईडी बना के रखा है, जो एनयू एप्लीकेशन के लिए आपने यूज किया, उसको ही आप एडमिन बना सकते हो या नया क्रिएट करके रख सकते हो। नया क्रिएट करो तो उसके वापस से डिटेल्स आपको भरना है। तो बेटर है, इजी, कि आप जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट है उसको ही एडमिन बना सकते हो। So now you can see the moment you did that, the links on the left hand side changed. Now your applicant ID has become an admin. ओके, जो मैंने एक स्लाइड में बता के रखे कि वो एडमिन के फंक्शंस क्या है, कि वो उनको यूजर्स क्रिएट कर सकता है, रोल दे सकता है, फंक्शनैलिटी दे सकता है, रीसेट पासवर्ड, ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप मेंटेन यूनिट यूजर्स कर सकते हो। अगर यूजर कोई लॉकआउट हुआ है, उसको यहाँ से रीसेट पासवर्ड से आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, एंड देन इनबॉक्स फैसिलिटी दी है कि इन केस कोई यूजर लॉकआउट हो गया है, तो वो एडमिन में राउट बाय डिफॉल्ट फंक्शन ऐसे बना के रखा है कि इन केस यूनिट मेकर एक है और यूनिट अप्रूवर एक है। मेकर ने जो बनाई रिक्वेस्ट और गलती से अप्रूवर लॉकआउट हुआ था, तो वो एडमिन में चली जाती है, एंड देन एडमिन कैन अनलॉक दैट यूजर एंड देन रीएलोकेट इट टू दैट पर्सन्स इनबॉक्स। ठीक है, दिस इज हाउ द रीएलोकेशन एंड द इनबॉक्स फंक्शन। So here I'll show how to create a maker and approver. यहाँ पे जैसे आपने एप्लीकेंट के लिए डिटेल्स भरे थे, वहाँ फर्स्ट हाफ पे ऐसे ही करना है। अब यूजर आईडी ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अगेन अवॉइड जंक डेटा व्यूअर, बिकॉज आपको ओटीपी आने के लिए यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स आपको कैप्चर करना है। बैंक कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, कुछ फाइल, आपका फोटो आईडी यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, and here you will have to select, you want to create a maker ID, you can create a maker and then give him the functions that you want. So in case आप एक function miss out करते हो, new LUT, update LUT, then that this user won't be able to file this transaction.
उनको लॉगिन करने के बाद अगर वो लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो उनको वैलिडेशन आएगा कि द रोल इज नॉट असाइंड टू यू, ऐसा करके उनको अलर्ट है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो फंक्शनैलिटी भी देखे रखो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर मेकर जस्ट टू क्रिएट एडमिन ट्रांजैक्शन, और दूसरा टू फाइल एंड सबमिट कस्टम ट्रांजैक्शन, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन सारे दे दिए। हमने यहाँ नोट हियर कि मेकर को यहाँ पे डीएसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है कि वो अप्रूवर आईडी से वेरीफाई जब भी होता है तो तभी डीएसी की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो आप यू कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। ठीक है, गो स्ट्रेट अवे फॉर द डिक्लेरेशन, सेव इट। सॉरी। एक मिनट। So I've created my maker ID. अभी default password for a maker is SEZ online@123. This is a default password. So whenever you log in with this, you can log in. और I'll show you one more area. आप कहाँ से लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट लॉग इन करके हम लोग ने ऑप्शन बना के रखा है, फर्स्ट लॉग इन। So you can enter the maker ID that you had created, the email address, and the mobile number that you had captured against it. Now you'll get an option to verify the maker ID. Just a minute. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल वेरीफाई करके रख दिया। आई कैन जस्ट लॉग इन अगेन विद फर्स्ट लॉगिन पे जाना है। टू So once you have verified your both email and mobile number, you will get an option to correct to change your password. So you can put the password that you like. Okay. ऐसे ही करके मेकर आईडी भी क्रिएट करते हैं, सॉरी अप्रूवर आईडी भी बनाता हूँ। तो शो एक बार मेकर एंड अप्रूवर क्रिएट हो जाने के बाद इट विल बी इजी फॉर मी टू शो यू द लिंक्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सॉरी, जस्ट अ मिनट। मेंटेन यूनिट में जाना है वापस से। So in case you don't know which user it is, then you can check your कि आपके कितने यूजर्स क्रिएटेड है। ये एडमिन आईडी है और ये आपका मेकर आईडी है।
ठीक है. Now you can select the role as unit approver and giving the same functionalities. अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने मेकर को रोल फंक्शनैलिटी देके रखी है और अपने यूनिट अप्रूवल को फंक्शन नहीं देके रखी तो वो रिक्वेस्ट उनके इनबॉक्स में नहीं जाएगा. यू विल हैव टू गिव द सिमिलर फंक्शन टू द यूनिट अप्रूवर आल्सो. ठीक है. सो जो ऐसे आईएफएससी यूनिट्स है, आईटी यूनिट्स है, उनके लिए हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग फॉर्म अनेबल करके रखा है. सो ऐसा कुछ इशू नहीं. अगर आप मिस आउट करोगे तो सिस्टम ने ऑलरेडी आपके लिए चेक बॉक्स क्लिक करके रखी है. एंड देन यू कैन गो एंड असाइन द डीएसी. यहाँ पे आप सीरियल नंबर दे सकते हो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिलेक्ट कर सकते हो. अपलोड योर सर्टिफिकेट डिटेल्स, select the declaration. ठीक है. And save it. Sorry यार, ये पैन डिटेल वापस आ जाता है. पैन डिटेल पैन डिटेल अपलोड किए. सर्टिफिकेट डीसी जस्ट a minute. And वापस से सिलेक्ट करना है. डीसी डिटेल्स आपको यहाँ पे कैप्चर करनी एंड सबमिट. So we have successfully created maker and approver now. We'll go to the first login. जो मेकर आईडी है उससे लॉगिन करना. कॉल 68238. Just a minute. Just a minute.
Mhm. एक मिनट रुकिए सर, जस्ट अ मिनट। आपका म्यूट हो गया अविनाश जी। अविनाश जी प्लीज अनम्यूट। Just a minute, huh? Just a minute, please. I'm just checking this detail. ओके In case users are not getting email verification link, or what you can do is you can again drop an email to SEZ info. ठीक है? Mention your unit user ID. Okay, user ID का role क्या है, and then given the details like your email, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, वो यूजर के अगेंस्ट जो मैप्ड है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज, कभी कभी डोमेन अपडेट नहीं होने के कारण पे ना वो आपको ईमेल वेरिफिकेशन नहीं आता, मतलब वाइट लिस्ट करना पड़ता है हमारे डोमेन्स को हमारे एंड से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सो वी कैन वेरीफाई दोज यूजर्स फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। बट प्रायोरिटी फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट लॉगिन के थ्रू ही लॉगिन करना है, एंड देन आपको आपके डिटेल्स वेरीफाई करके लेना है ईमेल के और मोबाइल के, एंड देन यूजर पासवर्ड सेट करके आपको लॉग इन करना है वहां से। अगर इन केस इफ दैट फेल्स देन यू विल हैव टू मेल अस, ठीक है। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने शायद से ईमेल गलत कैप्चर किया था, इसलिए वो शो आ रहा था।
It's not nsl.com, it's ndml.in. Okay, save. So now I can go back to the first login. Hey, so enter the user detail, email address which was captured. Just a minute. Huh? Just a minute. I'm just checking the data. That's why stop sharing. I'll enable the sharing soon. Just a minute. यज्ञेश ने कहा बोला था वैसे तेरा क्वेरी में क्या स्टेजिंग का Hello? Hello? अविनाश जी, we I, are not able यहाँ to तक use the किसी को screen. क्वेरीज है तो आप बता सकते हो जस्ट 2 मिनट्स प्रकाश में जी, एक बार लॉग इन मेरा करके छोटा बता सा देता एक हूँ मैं क्वेरी बस था, बाकी बैकएंड से तो क्लेरिफिकेशन वेरीफाई कर था रहा हूँ वो मैं हाँ जी मैम, बोलिए, ये बोलिए क्या हाँ क्वेरी था? हाँ, मेरा क्वेरी ये था, क्या अविनाश भी है क्या लाइन पे? हाँ जी। हाँ अविनाश जी, एक दिस माई क्वेरी इज रिलेवेंट टू बॉन्ड कम एलयूटी। इसमें ऐसा है, आपके जो एक्सेप्ट हमने बॉन्ड एक्सेप्ट करवा दिए आपके उधर, और इन दैट आफ्टर दैट वी हैव आल्सो रिसीव्ड द ईसी eligibility certificate, but portal is showing a LUT no data records to display, right? So why this is happening like that? Am I audible? Hello? Just 2 minutes. I'll just show you the login. Should I wait? जो करना कर दिया तो मत बोलो ना। We have done our part. बोलो।
फिर क्या है सर? प्रकाश जी, आर यू देयर? हाँ मैम बोलिए। अब मैं जो बोलना चाहती थी रिगार्डिंग दैट बॉन्ड कम एलयूटी, वो हमारे पोर्टल में नो डाटा रिकॉर्ड टू डिस्प्ले दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या व्हाट शुड वी डू, लाइक व्हाट इज दिस सॉल्यूशन टू दिस? LUT, as it is a legal very important document under the SEZ regulation, it is Right. always I'm sharing offline. my It is screen not again. online. Sorry for the wait. Okay. So अविनाश जी, you इनका ये go to the क्वेरी first है। login. अविनाश जी, Enter the address. मेरा एक ही क्वेरी Mobile करके number. मैं निकल जाऊंगी। वो उन्होंने खाली माइक ऑन करके रखा, बट वो स्पीकर उनका बंद है शायद, ओके, इसलिए ही इज नॉट एबल टू हियर अस। नो बट आई वांट टू गेट दिस सॉल्यूशन है हाँ, तो अननेसेसरी। मैम उसमें आपका जो ये एज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो फिजिकल हुआ था, इट वाज नॉन थ्रू SEZ ऑनलाइन। हाँ, तो अभी करेक्ट। आपको अभी जो अप्रूव कॉपी है वो ऑनलाइन में सबमिट करना है, गेट इट अप्रूव Just एंड a इट विल minute. शो इन द सिस्टम। अप्रूव हो नहीं है उसके अंदर ना, टैब ही नहीं खुल रहा है, हाउ टू सबमिट दैट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। एरर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, मेकर ओके, में लॉगिन करके LUT फाइल कीजिए आप। ठीक है, मेकर में अपलोड करना होगा। हाँ जी, न्यू LUT पे क्लिक करके डिटेल सबमिट करना है। ओके, तो वो मैं देखती हूँ। एक्चुअली अवधेश जिसको मुझे एक वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, बट ही इज चैट नॉट बॉक्स देयर। में डाल दीजिए, वो इज नॉट एबल टू हियर चैट अस। बॉक्स में डाल देती हूँ, क्या कि यूजर हाँ, फ्रेंडली होना चाहिए सिस्टम जो है ना, Just a दैट शुड बी minute. यूजर फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव वन, नो? मैम SEZ ऑनलाइन तो इससे बहुत यूजर फ्रेंडली है। आइसगेट एक बार काम करके देखो, देयर आर सो मेनी इश्यूज। हाँ, तो यहाँ पे एक आइसगेट का इंस्ट्रक्शन, आइसगेट का रजिस्ट्रेशन अभी मैंडेटरी हो जाएगा, बिकॉज पब्लिक नोटिस अभी इशू हो जाएगा वेरी सुन। ऑलरेडी जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर इशूड द नोटिस फॉर आइसगेट। कम मेरे हिसाब में अगेन प्रकाश जी। जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर ने तो आइसगेट का DTA प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन कर दिया है। इंपोर्टेंट शिपिंग बिल ओके, एक्सपोर्ट इज नाउ इन आइसगेट। SEZ ऑनलाइन में फाइल नहीं करना है। ओके, ग्रेट। मैं ये बोले थे, जैसे इंस्ट्रक्शन किट होते हैं ना, आपके जो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो विच इज द राइट ऑप्शन? देयर शुड बी सम इंस्ट्रक्शन किट शुड बी अटैच्ड विद द सिस्टम आल्सो, आई मीन हाँ इट्स जी, माय हाँ जी। सजेशन। हाँ, तो वो उसका सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल जो है दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सेल्फ लर्निंग ओके, विच मॉड्यूल्स आप वेबसाइट? डाउनलोड कर सकते हैं। SEZ? हाँ, इनके डाउनलोड सेक्शन में SEZ ऑनलाइन करके आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे ना, ओके, ओके, मेन वेबसाइट पे, वहां पे मिलेगा ओके, मैन्यूल्स आपको। I'll do one thing. I'll just create another. ओके, थैंक्स प्रकाश जी, थैंक्स। ओके। Two minutes. I'll just create a new profile immediately, and you can just go ahead with the application. I'll show you the details and everything. Sorry for this 5-10 minutes delay. अविनाश जी, मेरा एक आइसगेट का ट्रेनिंग सेशन है, कैन वी फिनिश इट अभी एंड वी कैन रीशेड्यूल। अभी बाकी का जो है नेक्स्ट वीक में रखें। अविनाश जी, ऑडिबल हो आप? Sir, I had one query. हाँ जी मैम बोलिए। सर, ये जो SEZ पोर्टल पे जब हम पहली बार फॉर्म भरते हैं, तो वी गिव आवर ईमेल आईडी जिसको वेरीफाई करना होता है। हाँ जी, अगर वो ईमेल आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो? Unit ईमेल approval. एड्रेस तो OTP नहीं आएगा, आपको मेल करना है इनको। ये अपना NSDL ऑनलाइन को बैकएंड में वो चेंज करेंगे, इनको ही करना है, अविनाश जी को ही करना है आपको, और या उनकी टीम को करना है। ओके, डन, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। प्रकाश सर, हाँ जी, ओंकार शर्मा फ्रॉम बोलार्क। हाँ जी सर। राम, स्टेजिंग पे जाना.
हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर ऐसा था, रीवेयर हाउसिंग का क्या है फंडा सर? वो समझ नहीं आ रही। एक मेल आई है, एक हेलीकॉप्टर लेके आए थे हम 3 मई को, आउट ऑफ हाँ चार्ज हो गया था, बट नाउ आई रिसीव 2 मेल्स के SEZ ये कस्टम्स। हेलीकॉप्टर का एनी CHO वो ये Yes, my CHA was there, Mr. Darshan, but हाँ he is not knowing anything. He is telling we have not done anything up to now. एक मिनट, जो SEZ ऑनलाइन में काम किया हो ना उसको, उसका कोई हो तो मैं एक मिनट, हाँ लेट मी चेक एनीबॉडी, कोई है क्या इसमें। रीहाउसिंग मतलब आपका वो कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन, वो एक ऑनलाइन के अंदर क्लोज करना होता है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, जैसे उन्होंने बोला था मेल में, मैंने लॉगिन किया था, हाँ उसमें जस्ट डेट डालनी है क्या? वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास री उसमें। वेयरहाउसिंग, हाँ, रीवेयर हाउसिंग। एक मिनट है, मैं किसी को बोलता हूँ, सीएचओ को लॉगिन देता हूँ। ठीक है। ओके, ठीक। अभी जैसे फर्स्ट लॉगिन हम लोग ने मेकर के लिए किया था, वैसे ही आपको फर्स्ट लॉगिन वी यूजर के लिए करना। Seven, five, eight, zero, one. Prakash ji, can I ask my question now? हाँ बस आई एम ट्राइंग टू गेट इट, अविनाश के नियर में, 2 मिनट दो सर। Okay, no problem. Nine, six, eight, nine. अविनाश जी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है। अविनाश जी यार ये क्या है?
हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो सर, मैं हाँ मेट्रो ठीक है। क्या बोल रहा अविनाश जी ठीक है, let's see first login वापस से हो रहा है कि नहीं। Okay. ठीक है, 6 7 5 8 1 ओके चलो ग्रेट वेरीफाई वेरीफाई जस्ट अ मिनट। हेलो, अरे स्क्रीन शेयर बंद हो गई और आपका वॉइस भी सुन नहीं रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अरे उसको बोलो ना अविनाश को मी आहे, माईक चालू आहे माझं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका? आप सॉरी, हमारा आवाज प्रकाश आपको जी, नहीं आ रहा है। वी कैन just a हियर यू, minute। शेयर योर स्क्रीन अगेन। अभी आवाज आ रहा है? कैन यू हियर अस अविनाश जी? हेलो, I think there is some technical issue with Avinash ji. Can you guys hear me now? Sorry, I just got to know that my Bluetooth was inaudible. हेलो हेलो अविनाश जी, मेरा हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ प्रकाश जी आवाज आ रहा है अभी। अच्छा, मेरे एक ऑलरेडी 2-3 क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आइस गेट उनका रजिस्ट्रेशन करना है। ओके वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। अभी एक खाली क्वेरी ले लेते हैं, ये हेलीकॉप्टर रिवेयर हाउसिंग का चलेगा है। हाँ चलेगा सर। सर बोलिए, ओलाट से कौन थे सर? हाँ सर, मैं सेल्फ ओमकार शर्मा। हाँ हाँ बोलिए जी ना। सर बोलिए। सर वो हेलीकॉप्टर हमने 3 मई को आउट ऑफ चार्ज यहाँ से ले लिया था, और अभी विद इन 60 डेज एक मेल आई है कि आपको रीवेयर हाउसिंग इज पेंडिंग। तो सीएचए को बोला, ही इज नॉट नोइंग, इट इज टेलिंग इट इज फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो। रीवैल्यूएशन सर आपके अप्रूवल आईडी पे आ जाता है रीवैल्यूएशन कंप्लीशन करने के लिए। हाँ जी आया, मैंने देखा उसका। उसमें क्या करना है सर? सिर्फ नीचे सर डेट आपको, डालनी है? हाँ जो कभी आपने रीवैल्यूएशन उसका डेट डालना है और आपको सबमिट करना है बस और आपका ओके रीवैल्यूएशन, हाँ वही ओके करना है ओके। आपको। वही आई डाउट था थिंक कि उसमें क्या क्या भरना हाँ है, कुछ पता नहीं। नहीं कुछ करना नहीं, वही तो करना है आज आपको की डेट बस। डाल के क्लोज कर दूं? जब भी आपका वेयरहाउस डेट हुआ यूजुअली क्या करते हैं, जो जिस दिन पे वेयरहाउस है उस दिन का डालते हैं, क्योंकि ये वेयरहाउस डेट का डेटा रिपोर्ट में आता है आपके लिए। तो आपने अगर डेट दूसरी कभी मतलब आपका शिपमेंट कुछ और डेट पे है, आपने दूसरे डेट पे है, तो रिपोर्ट में उस हिसाब से दिखेगा। तो सर लेकिन फिर वही तो पंगा है, अभी तो 60 डेज से ऊपर हो गया। 3 मई को हमारा आउट ऑफ चार्ज हुआ था, और आज तो अच्छा ओके वो वैलिडेशन की वजह से आपको ये इश्यूर है। ठीक हाँ है, जी आप हाँ जी। करंट डेट डाल के भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं। ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, I would थैंक यू। request you please confirm from the custom department. Here we are only giving you guidance and knowledge. आपको हाँ concerned सर पर्सन से मैं गया था, प्रकाश प्रतीक सर से बात कर लीजिएगा। मैं गया था सर, गया था उनके पास, पहले दिन ही गया था मेल लेके। तो वो बोले कि ओके अपने सीएचओ को बोलो, ही विल डू दैट नीडफुल, बट माय सीएचओ इज टेलिंग ओके दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है। नो इश्यूज। अच्छा आई थिंक सारा करके उनका डाउट था क्या? Yeah, हाँ हाँ Avinash हाँ ji, yes, या I'm या here. I'm here. आपका तो बहुत अच्छा मैंने ये सेशन लगा। मेरा एक छोटा सा थैंक एक यू। क्लेरिफिकेशन था। आई वाज टॉकिंग हाँ टू बोलिए ना। प्रकाश जी, इट इज रिगार्डिंग बॉन्ड कम एलयूटी जो इशू सबमिट करते हैं हम डीसी ऑफिस हाँ में। तो हमने हाँ फिजिकली सबमिट किया था ओके समटाइम इन मंथ ऑफ फरवरी, राइट? अच्छा एंड
उसके बाद हमने सबमिट करने के बाद इसी भी ऑब्टेन किया है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे Okay. पोर्टल पे एलयूटी में ये दिखा रहे हैं नो डाटा रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाई दिस इज। आपने मैन्युअली, क्योंकि आपने ये मैन्युअली कर दिया था इसलिए आपने सर्च ऑनलाइन में रिकॉर्ड नहीं किया ना। हाँ जी। बेसिकली आप अगर आप सर्च ऑनलाइन में आपने न्यू एलयूटी फाइल करके रख दिया था तो आपको वो डेटा अवेलेबल हो जाता था। तो अभी मुझे क्या करना है अविनाश? हाँ ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एक मैन्युअली अप्रूव्ड एलयूटी है, राइट? हाँ। तो आपको यूनिट मेकर से लॉगिन करना है, ठीक है? ओके वहां पे एलयूटी करके लिंक रहेगा, वहां ओके पे एलयूटी सबमिशन डिटेल्स रहेगा, ओके ठीक है? So that is a link where you already have an LUT with you, ओके and you have to just upload the detail as it is ओके and submit it to the custom officer. वो ओके डायरेक्टली एसओ के पास चला जाएगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? ओके ओके उसके बाद क्या होएगा, जैसे अप्रूव हो जाता है ना, वो जो आपका एग्जिस्टिंग एलयूटी वो सिस्टम में अपडेट हो जाता है। Okay, so I don't need to do anything except to submit through this in new LUT, right? राइट, यू मेकर आईडी से एलयूटी Okay, पे जाना है और आपको एलयूटी okay, सबमिशन डिटेल क्लिक okay, करना है, okay. एक चीज और थी, ठीक है? ये जो हाँ 30,000 आपके जो पेमेंट होती है, ये क्या हर हाँ। एक के लिए एप्लीकेबल है या जो नए यूनिट्स रजिस्टर होते हैं ना, सी हाँ? दिस इज द रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट दैट unit has to pay to NSDL because we are managing service provider, we are maintaining this, so you I have to want make this I you will wanted have to to make this understand, like initially we have paid 5,000 along with the our application form. So that this is in 5,000 you addition have on paid to this? the DC office. No, that don't get confused. That 5,000 that you have paid is to the DC office for your annual Okay, application process. correct, ठीक है? correct. This is when you're getting onboarding on SEZ online. Okay, तभी Okay, आपको हमें registration fee payment करना है। तो करना पड़ेगा, that means we have to pay this. जी 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 हाँ, अच्छा, आपको करना और ये पड़ेगा। जो हाँ, तो इसके अलावा आपके जो आईडी कार्ड जो इश्यू करते हैं वो आपके अंडर में ही आते हैं कि नहीं? नहीं, आईडी कार्ड आप जो एम्प्लॉइज अ, आईडी जो करते हैं नहीं, हम नहीं इशू करते वो, इट्स नॉट अस। आई उसको गेस मुझे हाँ डीसी मतलब आईसीजेड में एंटर करने के लिए आपको आईडी कार्ड कब बोल रहे हो, राइट? हाँ करेक्ट, हाँ, वो ठीक आई है, थिंक बस छोटी सी यही थी। डीसी ऑफिस हाँ को पूछना पड़ेगा ओके, क्या। विल अप्रोच देयर। एक मैं हाँ सजेशन दे रही थी कि थोड़ा आपका हाँ जो ये एनएसडीएल की जो वेबसाइट पे है थोड़ा यूजर हाँ फ्रेंडली होता है ना, तो रेस्पॉन्सिव हाँ। हो अगर, तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल द यूजर्स, राइट? रिस्पॉन्सिव एज इन मैम, जैसे And you see something like information kit होती है ना, like when we choose the multiple options, that should show us ओके that which is the right option to choose it. So instruction kit होने से that benefit we can get it. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू वन लिंक, आई विल शो यू वन लिंक, ठीक है? हमारा, Okay, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट स्टे ऑन द yeah, लाइन। ओके, सो दिस इज आवर लॉगिन पेज, ठीक है? okay, यहाँ पे लॉगिन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है, जैसे एससीजी ऑनलाइन सपोर्ट, यहाँ पे okay, हमने एफएक्यूज देख रखे हैं, डेटा यूटिलिटी अपलोड, टेक्निकल सपोर्ट, मतलब हमारे फोन नंबर्स यहाँ okay. पे अपडेटेड है, हम्म ठीक है? हम्म यहाँ हम्म, पे हम नोटिफिकेशंस जो भी रिसेंट अपडेट्स करते हैं सेज ऑनलाइन में, मेरा स्क्रीन अच्छा, दिख रहा है राइट आपको? हाँ श्योर, I'm looking at, हेलो, yeah माय I'm स्क्रीन looking इज at, विजिबल राइट? yes it's visible. Yeah, it हेलो, is quite visible. Yeah, I got your point. So you mean to say it is there already in place? Hello. या हेलो, कैन यू Yeah. हियर मी? Thanks, Avinash ji. Thanks for हाँ, सो नहीं वेट information. जस्ट अ मिनट, जस्ट नहीं नहीं Yeah. नहीं वेट, देयर इज वन मोर एरिया, यू कैन गो टू एससीजेड मैनुअल्स, ठीक है? नीचे SEZ बॉटम manuals. लिंक, ये नीचे जो लिंक Okay. दिखा है ना, हाँ. सिस्टम सेटिंग्स, यूसेज मैनुअल, फाइल Correct. फॉर्मेट, Yeah. वहां पे जाओगे आप, तो आप, ये हमारा लैंडिंग पेज है, बेसिकली दिस इज आवर होम पेज, ओके? Okay. सो आप ये जो लॉगिन लिंक देख रहे हो, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, यूजर लॉगिन, दिस इज आवर Okay. मेन वेब Okay. पेज, एंड इफ यू गो टू द Okay. डाउनलोड पार्ट यू कैन सी द मैनुअल्स व्हिच आर अवेलेबल। तो हाँ. Correct. हर Correct. एक मॉड्यूल जो अवेलेबल है सर्च ऑनलाइन में, हम लोगों ने इसके लिए डिटेल यूजर मैनुअल लिखा
है, ओके उसके लिए अगर आइटम अपलोड्स है उसके लिए एप्लीकेबल है तो आइटम अपलोड की फैसिलिटी दे चुकी, मतलब वो लिंक दिया है कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट का मैनुअल है, ई लॉक सुपर साइनर का मैनुअल है, हम्म ठीक है। यूजर मैनेजमेंट, ये जो मैं बता रहा था, यूनिट मेकर और अप्रूवर कैसे क्रिएट करना है, ये yeah सारा I मैनुअल जहाँ पे yeah अवेलेबल है, yeah कैन सी दैट। okay oh yeah सो दिस I इज, got it सो got it हाँ, तो ये आपके लिए भी नॉलेजेबल होगा कि, और बाकी Hmm. के जो उनको जो डाउट रहेगा उनके लिए भी No, इजी it's रहेगा, good. Thanks, ठीक है। thanks for the information sharing with us, नो and वरीज, thank you नो very वरीज, much. Thank you very much, मोस्ट वेलकम मैम, Prakash ji ko especially. I thank you very much, Prakash ji. no worries मैम। just a minute, I'll just share my contact details so that Yeah, people can come. yeah. Just a minute. So ये मेरा लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और दिस इज माय ईमेल No, आईडी। it's जस्ट अ not coming. मिनट, It's not coming. it's not coming, No. I'll share the entire screen, just a minute. Okay, now can you see? Yeah. हाँ अभी दिख रहा है। I take a snap. Yeah, ठीक है। That's so nice of you. Thanks, and No worries I मैम, would like to join in further your this kind of definitely online मैम, training. definitely Thank you. definitely, Thank you, guys. no worries मैम, ठीक है। Thank Any other doubts please? Hi, Avinash ji. Yeah, I had two questions for you. One was yeah. I'm not able to update my IC code on the SEZ portal. Can you help me with that? What exactly issue are you getting? Import export code. See, I have been able to update my GST number, but my Okay. IC code number is not showing on the portal. अच्छा, दो तरीके से है, ठीक है। आप डीसी ऑफिस पे डायरेक्टली अप्रोच करके आप आईसी कोड आपका, उनके उनके पास लॉगिन है, यू कैन अप्रोच देम, ठीक है, एंड दे कैन अपडेट द आईसी कोड फ्रॉम देयर एंड, दे हैव दैट लिंक विद देम। Okay, fine. So I have to physically approach the DC's office and then या they will या update. यस दे कैन। And second doubt is with regarding my lease deed. हाँ So my हाँ, lease deed, I've executed it with the developer on May 31st, and on ओके, the portal it's showing the exit date as 2029, whereas my lease deed copy is for 9 years. So ideally it is still valid till 2033, and सो हाँ, सेज ऑनलाइन and I'm में not able to edit these details. लीज आपने ऑलरेडी सेज ऑनलाइन में फाइल करके सबमिट कर दी, ठीक है। Yeah. या तो अब ये डेट, कौन से डेट के बारे में बताओ, आपने जो अंदर डेट डाला है या नहीं, आप किस? अगर देखोगे तो यूनिट लीज डीड का जो ऑप्शन है वहां पे एक स्टार्ट डेट है और एक एग्जिट डेट है, लास्ट डेट है। तो स्टार्ट हाँ डेट इज एज पर लीज डीड जो 31 मई 2024 है, बट हमारा जो हाँ, लीज एग्रीमेंट हुआ है डेवलपर के साथ दैट इज फॉर 9 years। ओके। तो वो है 2033 तक वैलिड है, बट पोर्टल पे मेरा एग्जिट डेट 2029 तक ही आ रहा है जो एडिटेबल नहीं है। अच्छा, एडिटेबल है। एक काम करो ना, मुझे आप वो ये इस पे मुझे ईमेल करो, मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ से चेक करो। सो जस्ट शेयर मी अ स्क्रीनशॉट एंड गिव मी द यूजर आईडी एंड गिव मी द लीज दैट यू हैव सबमिटेड, आई विल जस्ट चेक एंड देन आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि क्या कैसे कर सकते हैं, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक यस, थैंक यू सो है। मच। या एनी अदर क्वेरी सर? From my end, it's done. Thank you, sir. Yeah, most welcome. I hope, I think I was covered. मैं एक्चुअली आई वांटेड टू कवर यूनिट अप्रूव लॉगिन करके भी आपको दिखाना था, बट देयर सम वैलिडेशन दैट इज हैपनिंग, सो आई जस्ट चेक दैट मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वो पूरा कवर अप कर लूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि यूनिट अप्रूव की साइड से आप एलओए एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हो, एंड मंथली रिपोर्टिंग, सर्व रिपोर्टिंग सारी कैसे फाइल कर सकते हो। तो वो सारा चीज भी कवर कर देता था मैं वो इससे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट सेशन एक थोड़ा डिटेल्ड सेशन कर सकता हूँ, इसे थोड़ा एक्सटेंड करके। Sure, sir. It will definitely help us a lot in this. आई होप जितना मैंने अब आज कवर किया
Thank you, Avinash. Thank you, sir. Thank you, Prakash. Thank you, team. Thank you. Thanks, Anand. Yeah. Thank you.